Right. I think if I can add to that, there is another discussion या sort of जिसे कहते हैं ना criticism इसके ऊपर आता है कि bloggers और influencers show a very glamorous lifestyle, and I feel like कि हर life के अंदर there are glamorous areas and then there are very real, everyday things happening as well. ऑथेंटिसिटी के ऊपर ही बिल्ड करते हुए लॉट ऑफ टाइम्स वो होता है ना कि जब स्टार्ट में होते हैं नए नए इसमें आते हैं तो आप कहते हैं यार मुझे द रीज़न वाई आई विल बी अ समबडी इज़ इफ़ आई एम ग्लैमरस. मुझे हर इवेंट का इनवाइट मिल जाए, मैं हर इवेंट पे पहुंचा हुआ हूँ और मैं हर इवेंट को दिखा रहा हूँ लोगों को कि वो है. बट आफ्टर सर्टन पॉइंट यू स्टार्ट टू रियलाइज के यस अगर मुझे कोई चीज़ जेन्युइनली अच्छी लग रही है और वो ग्लैमरस भी है, आई लव टू डू इट. बट अगर मुझे चीज़ अच्छी नहीं लग रही, आई डोंट हैव टू डू इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट. एंड उसी की फ्लिप साइड के ऊपर शोइंग योर एवरी डे ऑनेस्ट लाइफ इज़ नॉट नेसेसरली अ बैड थिंग. लाइक कोई आपको बैठ के फिंगर पॉइंट करके नहीं कहेगा यार तुम तो बिल्कुल लूजर से हो, नॉर्मल से हो. No, and even if people say that, it's fine. People say that sort of stuff to me every day. Like right. मतलब people. वो किचन के ऊपर हमारा कितना कहते हैं आपको किचन कितना. Yeah, but that is the kitchen that I have. You know, too bad I don't have a new renovated kitchen. It's not like मतलब मेरी यहाँ शादी हुई है, मेरा वही किचन है. So अब I'm not going to, if I'm enjoying making a meal and I want to share about it, I'm really enjoying it and I really want to tell my followers about it. तो शुरू में इस तरह होता था कि यार ये क्या है, मैं सिर्फ किचन की बात नहीं कर रही, किसी भी चीज़ में कि अच्छा मेरा ये अच्छा नहीं लग रहा, ये मेरा ये अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इस चीज़ को. बट दैट्स व्हेन यू आर होल्डिंग बैक ऑन द बेस्ट सॉर्ट ऑफ कंटेंट बिकॉज दिस लिटिल अनोइंग थिंग्स व्हिच आर सो इररेलेवेंट आर स्टॉपिंग यू फ्रॉम क्रिएटिंग the real stuff. And ठीक है, like 2-3 लोग आएंगे जो इस तरह की चीज़ें point out करेंगे, but then there will be like so many other people who will be appreciating the actual content in that. And who will be able to sort of, to be very honest, I mean, who has a glamorous kitchen? There are people who have it, but everybody doesn't have a glamorous kitchen. Yeah, exactly. And I'll tell you this, मतलब मुझे इसी चीज़ से होता है कि people will complain about how Instagram is so fake and artificial and so made up, right? And then when you put up anything real, people will be like, oh, fix this, iron your shirt. Yeah, and that pushes you sort of, especially tie your hair and things like that, like pull your sleeves up and like stuff like that. Like, no, I mean, I'm not going to pretend here and be a certain way when इसी तरह है बस. Yeah. तो मुझे जो एक चीज़ बहुत वो लगती है इन दिस एंटायर प्रोसेस, मुझे ये चीज़ काफ़ी एक्चुअली पॉइंट पे अनॉय कर चुकी है कि यार व्हेन आई एम रियल यू वांट मी टू फिक्स इट अप, and when I'm very made up and when I fix it up before I do it, so then it's too fake for you, then you can't resonate with it. Right. But in recent times I've just decided to like I don't care. I recently did a video और उसमें ना वो ये था कि मैंने अपना मेकअप आधा किया और मेरा बड़ा दिल चाहा कि मैं बस ये वीडियो कर दूँ. वो जायजी टीवी वाली की थी. हाँ ठीक है. and I did that video and the first few comments were just about के मेकअप नहीं किया आज आपने, मस्कारा नहीं लगा हुआ, and it was a very very informative very good content. Like I was very proud of myself for doing that. Right. But for the first half an hour I was just feeling like यार मैं लगा ही लेती मस्कारा and I couldn't enjoy my डेंटिस्ट्री के बारे में बात कर रही हूँ, but the first thought that's coming into your head is कि मैं मस्कारा लगा कर डेंटिस्ट्री की बात कर लेती शायद बेहतर होता. And to be honest मेरा उस वक्त इतना मूड था, मुझे पता था ना कि अगर मैंने अभी उस वक्त ना मेकअप कंप्लीट करना था, ये वो करना था, मुझे तो अच्छा यार अभी छोड़ो 10 और काम में ये है फलाएं, तो अभी मेकअप पूरा नहीं करने का दिल चाह रहा तो वीडियो भी ना बनाओ. Because basically I wanted to chill. I didn't want to do the whole thing and whatever. So I was like नहीं, अगर मैं इसमें पड़ गई तो फिर ये चीज़ नहीं निकलेगी. And then I was like forget it, I'll just do that video. It doesn't matter. So the first few comments you were there. I was like यार I don't know, I should have done that. And you said कि basically it's fine, it's raw, अभी आप देखें. And then after a while the comments were just incredible. People were very appreciative of the content. So, and that like we see the result as well. It was raw and it worked. Like coming back to our original conversation ke authenticity, it takes you a while to understand because we've gone through that process, but authenticity really works. People are sick of seeing that curation. I think कि सोशल मीडिया के ऊपर स्टार्ट में वो आए और उन्होंने कहा कि अच्छा प्रिटी क्यूरेशन उस तरह की चीज़ें अच्छी हैं, बट आफ्टर अ व्हाइल दे रियलाइज कि भाई हमारी ह्यूमन लाइफ इज़ रॉ. It has its high points, it has its low point, it has the glamour, it has the everyday simplicity. And unless you have that entire spectrum, आप नहीं. The truth is you are not glamorous 24/7. Exactly.
right? You're not. Yeah, you can't wake up with makeup on, you can't go to sleep with makeup on. You know, you have that. आप पता है, everybody knows. And the truth is, like, it's really about comfort. So a lot of people are very comfortable getting glamorous. So it's as simple as that. अगर मेरा mood होता है तो मैं भी full वो करके करती हूँ. What I'm saying is that there are no rules. That is exactly what I'm saying. I'm not saying stop curating. No, but that's what I'm saying. Curation, if it's natural, it's authenticity, right? मैं वही बार-बार कह रहा हूँ, there is the whole spectrum. Glamour होगा आपकी लाइफ में. ईद आएगी, आप तैयार हो गए, आप एक दिन सुबह अच्छे उठते हो, कॉन्फिडेंट हो, आप कहते हो यार मैं तैयार होना चाहता हूँ, आप तैयार हो गए. बट उसी के साथ अगले 2 दिन बाद जो है ना, शायद एक ऐसा दिन आए जिसमें आपके बाल नहीं बने हुए होंगे, आपका नहीं दिल कर रहा होगा. संडेज को मेरे बाल ब्ला होते हैं, एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मुझे होता था कि यार मैं स्टोरी में डालूंगा तो कोई आएगा यार बालों का क्या सीन है, इसका क्या सीन है. बट नाउ आई स्टार्टेड टू रियलाइज कि देन पीपल appreciate, in the long run people appreciate it more if they see कि यार अच्छा ठीक है, इसके कभी बाल नहीं भी बने हुए होते, कभी इसके बाल बने हुए होते हैं, it's fine. Yeah, no, and I just basically my thing is that curated, not curated raw, whatever, ठीक है. If the content is genuine, the curation is fine too. Right. ठीक है, अगर उसमें जो बात आ रही है वो genuine आ रही है, वो that's true to that person, then जो आप उसको prettify कर रहे हो, that's fine too. Right. You know, that's okay. But if it's really coming in the way of the content, then that's not fine. But then do you think, again that's a conversation, कि आपने कहा कि आप उसको prettify कर रहे हैं, but in the longer run do you feel like that does fall in that criticism के for a consumer, आप सही बात कर रहे हैं, बट अगर आपकी इमेजरी जो है वो परफेक्टली क्यूरेटेड है, तो डू यू थिंक जो कंज्यूमर है वो स्लोली एंड स्टडीली विल स्टार्ट इंटरनलाइजिंग कि दिस इज़ द न्यू नॉर्मल, लाइक दिस इज़ हाउ इट्स सपोज टू बी. लाइक फॉर एग्जांपल, मैं इसको इस तरह एग्जांपल देता हूँ कि आप कहते हैं कि जी आप अब खाना भी बना रही हैं तो एक खूबसूरत ग्लोई किचन के अंदर, जब आप अपने कमरे का दिखा रही हैं तो एक खूबसूरत ग्लोई कमरा, and then you go out and it's the same, and then so एक average जो लड़की देख रही है वो देख के कह रही है कि this is the lifestyle that one needs to live in, whereas the fact is कि yes, your room was renovated when you got married, so it's pretty, but your kitchen isn't, and that's fine. So I feel like curation के अंदर अगर किसी का घर माशाल्लाह बहुत अच्छा है और वो उसको दिखा रहे थे, again that's not curation, that's ऑथेंटिक, वो दिखा रहा है, और उसमें शायद वो बाहर जाएगा तो वो जो अपनी लाइफ में खा रहा है, वो ठेले वाले फ्राइज खा रहा है तो उसमें वो वहाँ पे दिखा रहा है कि भाई मेरा कोई वो तरह का सीन नहीं है. लेकिन जब हम क्यूरेटेड की बात करते हैं, दैट मीन्स कि आप हर चीज़ को ना परफेक्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ प्रिटिफाइंग इट, बिकॉज आई फील लाइक हम लोग भी उस एंग्जाइटी में होते थे एक ज़माने में जिसमें हमें प्रिटिफाई करने का होता था कि इट नीड्स टू बी प्रिटिफाइड, बट यू नो वेयर दैट लीड्स यू, कि तो आप कॉन्टेंट नहीं निकालते और फिर आप एक constant anxiety में होते हैं. नहीं, but then again Muzammil, it's not like we take pictures from our phone and upload on the feed. At the end of the day हम like that's what I'm saying कि मैं curation की जब बात कर रही हूँ तो I don't just mean कि चीज़ों को प्यारा रखना, I mean as well कि यार आपकी quality, for example, that I agree with. आपकी quality क्या है, आप एक respectable क्या मैं कहूँ, but like एक आप अपना रिस्पेक्टेबल हुलिया लेके आप आ गए हो, ठीक है ना, दैट्स नॉट क्यूरेटेड. हाँ, दैट्स नॉट क्यूरेटेड. देखिए क्यूरेटेड से अच्छा, इसकी डेफिनेशन आई थिंक बड़ी इंपॉर्टेंट है. फॉर मी क्यूरेटेड इज कि जो है नहीं आप उसको बना रहे हैं बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपल. सो आपने कहा कि जी अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर बैठा हुआ हूँ तो अब मैं कहता हूँ कि अच्छा मैं पीछे ना एक शेल्फ डाल देता हूँ और ये कर देता हूँ, और फिर मैं इसी तरह जो है ना कहीं बाहर जाता हूँ तो मैं पूरा एक सेटअप बना करके खाना आ रहा है ना मेरा, तो मैं खाने के साथ 4 और एक्स्ट्रा चीज़ें मैं मंगवा के वो रख के और फूल पट्टियाँ लगा के. सो दैट इज क्यूरेटेड. अ लॉट ऑफ ब्रांड्स डू क्यूरेटेड, राइट, बट व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बीइंग्स जो कि ऑथेंटिसिटी दिखा रहे हैं कि दिस इज आई एम शेयरिंग माई लाइफ स्टाइल विद यू. सिमिलरली अगर मैं इसमें कहूँगा कि फैशन का बंदा है, फैशन ब्लॉग चला रहा है, अब वो क्यूरेटेड होगा भाई. They're talking about fashion. They're going to have photo shoots. But if somebody is talking about lifestyle or sharing their, not even talking about lifestyle, sharing their lifestyle, वो curated होता है. But yeah, I get it. But then I just feel like, for example, if you are a lifestyle influencer, right? So आप अच्छे से अच्छा lifestyle ही दिखाओगे. हाँ. Because you are trying to influence people, right? So you would want to show the perfect lifestyle. So you will show, I have a really nice, whenever you take a picture of a couch, you'll make sure कि वो सारा fit है, because you're trying to show a lifestyle like that, right? हाँ, I guess. So, like, that's what I think बड़ी grey area है, बड़ा वो
दरमियान में आपको समझ नहीं आता कि at what point can you actually It's as simple as this. If we are talking about lifestyle, you should show the best kind of lifestyle, because if you're influencing people in that area, best sort of lifestyle that you have, that you can get. Yes. Not something that you don't have, but something that you have. Right. ठीक है? But नॉट ये कि अच्छा किसी से बोरो कर लिया कुछ, किसी से बोरो कर लिया कुछ, रख दिया एंड प्रिटेंड लाइक इट्स योर। पोस्ट आई है तो मैं अपने दोस्त को कॉल करूं, यार तेरा किचन नया बनाया तो। हाँ, दैट्स व्हाट आई मीन बाय जेन्युइन। अब आपका जो किचन है, आपका जो टेबल है, आपका जो, आप वही यूज करो। कल को इंशाल्लाह उसको रेनोवेट करेंगे, होगा तो अच्छा भी हो जाएगा। हाँ, यू नो, बट दैट्स इंटरप्टेड मी, आई फॉरगॉट व्हाट आई वाज सेइंग। मैं एक पॉइंट की तरफ जा रही थी। क्यूरेशन मतलब लाइक आप अपना, अच्छा हाँ, अब फॉर एग्जांपल लाइक हम पॉइंट ये था, लाइफस्टाइल की बात करें, फैशन की बात करें, आप वही दिखाएं जो आपका फैशन है, ठीक है ना? यू शो द बेस्ट ऑफ इट, ठीक है? यू गुड एट फैशन, you show people how to, be fashionable in this way and in that way. It's your thing. You have a knack for it. Lifestyle maybe, But for example, if you're talking about something, for example, जो मैंने कुछ dental hygiene के ऊपर for example बात की है, तो then it shouldn't matter. Then it shouldn't matter what shirt I'm wearing, what clothes I'm wearing, what sort of makeup I have on. And I feel like even if, and it's because influencers are leading that way, and if influencers have come to understand that now, like, for example, I have come to understand that now, that it doesn't matter if I'm talking about something to do with medicine or health or relationships, for example, then I don't have to be looking my best. Yeah, because that's not the point. That's not the area I'm trying to influence you in right now. But if I'm talking about makeup, then maybe that's fine. Yeah, अब वही वाली बात है कि ट्रैवल की, आप अपने घर में बैठ के ट्रैवल की बात नहीं कर सकते। So I mean, you have to then go out and travel, and then travel में भी फिर आप जाएंगे तो आप अपने ट्रैवल करते तो आप रिलैक्स करते हैं। जब आप ट्रैवल की बात कर रहे हो, then you will go out the extra mile and you try out new things and you'll show. Plus I do feel like कि जो बेस्ट और परफेक्ट की बात थी, उसमें भी एक चीज़ आती है कि अब जहाँ हम क्यूरेशन की बात करें ना, तो अगर फॉर एग्जाम्पल इफ somebody is sharing a recipe, then the kitchen does not matter. Right. Do you get it? Like, it's about the recipe then. It doesn't matter कि kitchen कैसा है. बिल्कुल. ठीक है? तो because what you're sharing, that's the content and that's what matters. ठीक है? और हर किसी का अपना वो एक होता है. अब a lot of people will, for example, ask an influencer who's not a makeup influencer to show how they do their daily makeup, because your followers like it. Right. This is not something that you have influence in, or not something you're an expert in. Right. But people want to know how you do it because they are influenced by you. They like how you do it, right? Right. Sorry about that. हमारे कैमरास में 30 minute limit है, so I'm not sure कि exactly कहाँ से कटा है, but